Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. We were discussing the neuronal functions of retina in last lecture. A few things we discussed about the neurons in the retina, and we will continue the neuronal functions of retina today as well. But before that, one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. ये सूरह an-निसा की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो ला ताकुलू अम्वालकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ, एक दूसरे के माल को नहीं खाना आपने। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, एक दूसरे का माल कब खाने का है? जब तुम में आपस में तुम्हारी रजामंदी से तिजारत हो, लेन देन हो। रजामंदी से जो लेन देन हो तो उसका किसी को मुनाफा किसी को कमी, लाइक दैट। तो ये तरीका अल्लाह पाक सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आयुल्लज़ीना आमनू, आपस में एक दूसरे का माल नहीं खाना, तिजारत में एक दूसरे का माल, एक का माल दूसरे की तरफ, दूसरे का माल अगले की तरफ, लाइक दैट। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल मत करो, यानी ये बातिल का दूसरे का माल खाना अपनी जानों पर जुल्म, अपनी जानों पर जुल्म न करो, अपनी जानों को मत कत्ल करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तो तुम पर बहुत मेहरबान है। तर्जमा देख लें, क्या ईमान वालों अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो तो उसमें एक को फायदा हो सकता है, दूसरे को, लाइक दैट, माल एक दूसरे का आपस में मिक्स हो सकता है। और अपने आप को कत्ल न करो, ये आपने आपको कत्ल के मुतराद, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है ये बातिल माल खाना। यकीनन अल्लाह तुम पर नायत मेहरबान है कि इतने अच्छे प्रिंसिपल, इतने अच्छे कवानीन आपको बता रहा है, नबी को भेजकर तुम पर मेहरबानी की है कि तरीका जिंदगी का सिखा दिया। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we will discuss the neuronal function of retina, different layers of retina. We have seen those 10 layers of retina in last lecture. हमने बात कर ली थी. These are the different neuronal elements: layer of rods and cones, pigmented layer, and then there are horizontal cells. नाम भी ले लिए थे. There are the endocrine cells here, and then the ganglion cells, which are the optic nerve cells and bipolar cells. So functions of these cells we are going to talk about. Different neuronal elements in the retina, we saw that rods and cones are the first neuronal element. They are the photoreceptors. They are the photoreceptor which are sensitive to light, and we are going to see how these rods will be stimulated. Then there are bipolar cells, next neuronal important elements. पिछली slide में देख लें, that is bipolar rods are connected with the next important neuronal element in the bipolar cells. So they transmit signals vertically from the rods and horizontal cell to the ganglion cell. From the rods, horizontal cell को फिलहाल रोक दें, they transmit the signal from the rods to the ganglion cell, to the next endocrine cell and ganglion cell. ऐसी है. Horizontal cells are also there. Horizontal cells are involved in the phenomena of lateral inhibition. थोड़ा सा हम आगे देखेंगे. So they are also stimulated. They also affect, connect with the bipolar cells. So they transmit the signal from the vertically from the rods and horizontal cells to the finally to the ganglion cells. किसी जगह दरमियान में endocrine cell भी आ जाता है, and किसी जगह bipolar cells are directly connected to ganglion cell. दोनों बातें हो सकती हैं. Then there are horizontal cells, अभी जिक्र किया जिसका, that is they transmit signal from the rods and cones to the laterally placed bipolar cell. This is stimulated rod and cone, it will transmit the signal to the bipolar cell, which will stimulate the ganglion cell. ये तो एक transmission हो रही है. But the horizontal cells, which will be stimulated by this stimulated rod, they will
laterally placed bipolar cell will be inhibited. This is responsible for the phenomena of lateral inhibition to increase the contrast between the stimulated and unstimulated area. आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे phenomena of lateral inhibition के लिए. So horizontal cells, they transmit signal from the rods and cones to the laterally placed bipolar cells, उनको inhibit करने के लिए. Then there are immigrant cells. There are several types of immigrant cells. They transmit signal from the bipolar cells से भी लेते हैं to the ganglion cells and other immigrant cells से भी लेते हैं. आपस में भी signals उनके connect होते हैं and bipolar cell से भी ganglion cell तक transmit करते हैं. Diagram में दोबारा हम देख लेंगे. So ganglion cells, immigrant cells. Then the final cell is the ganglion cells. एमेक्राइन सेल के बाद सबसे फाइनली जो ऑप्टिक नर्व सेल्स, दे आर नोन एज गैंग्लियन सेल्स. द एक्सॉन्स ऑफ दीज सेल्स आर द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स. यहाँ से ऑप्टिक नर्व सेल. सो द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉनल एलिमेंट्स, उनका जो भी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, फाइनली दे कन्वे द इंफॉर्मेशन टू गैंग्लियन सेल एंड गैंग्लियन सेल विल सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, टू द विजुअल कॉर्टेक्स फॉर द परसेप्शन ऑफ दिस विजन के लिए. Then there are, ये भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, though they are not in the diagram, but there are certain inhibitory cells probably. Interplexiform cells retrograde inhibitory signals from the inner plexiform layer to the outer plexiform layer. Inner plexiform layer where the immigrant cells and the bipolar cells are synapsing with the ganglion cell. That network layer is the inner plexiform layer. So this is the final excitatory area जहाँ पे ganglion cell को पे signal. But there are some cells which are sending to the more outer layers की तरफ signal जा रहा है, may be involved in the some lateral inhibition phenomena, plexiform layer, कुछ inhibitory signal यहाँ से भी जाते हैं. Now the connections of these neuronal elements, all these cells, bipolar, right from the beginning, the rods and cones and the bipolar cell, immigrant, horizontal cell, how they are connected. Rods and cones differ in their onward connection. रॉड का कनेक्शन एंड कोन का कनेक्शन थोड़ा से फर्क है, सेल्स का भी फर्क है. कोन पाथवे इज थ्रू लार्जर एंड फास्टर न्यूरॉन्स. बड़े न्यूरॉन्स हैं और you know it if you have studied the nervous system. The bigger neuron, the bigger nerve fiber, they are fast conducting fibers. So cone connection is to faster connection, bigger neuronal connection and faster connection, 5 times faster than the rod pathway. एक तो ये बड़ा फर्क है कि कोन वाले सेल्स जिनके साथ कनेक्शन है, they are fast conducting neurons and the velocity of conduction is 5 times more in the whole pathway. सिर्फ एक फाइबर के whole pathway में कोन conduction pathway is 5 times faster than the rod pathway. Then in fovea, ये भी connection थोड़ा सा, we had talked something about that. In fovea where there are no rods, only cones are there. One thing, cones are very slender, second, and the cones have got more linear relationship with the ganglion cell. That means for every cone there is probably one ganglion cells. There is no convergence of the cone on the single ganglion cell, and we discussed it in the previous lecture, probably visual in relation to the visual acuity. There is maximum visual acuity here in the foveal region. So in the fovea, cone vision only, एक तो सिर्फ वहाँ पे cone है, and 3 neuronal pathway, ये भी एक important बात है. One cone connected to the bipolar cell and then connected to ganglion cell, that's all. These are the 3 neurons involved in this cone vision, color vision. एक तो फास्ट भी है और 3 न्यूरॉनल पाथवे होने से भी फास्ट हो जाता है. नंबर ऑफ न्यूरॉनल एलिमेंट जितना पाथवे में ज्यादा होंगे, देयर विल बी मोर, बिकॉज़ सिनेप्टिक डिले, द इंपॉर्टेंट फिनोमेना समटाइम इज कंज्यूम इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. सो देयर इज सम टाइम कंजप्शन, सिनेप्टिक डिले. सो देयर इज नंबर ऑफ सिनेप्सेस जितने कम होंगे, देयर विल बी फास्टर कंडक्शन. सो दिस इज इन द फोवियर रीजन, cones have got only 3 neuronal pathway.
पेरिफेरी में दोनों है, 3 न्यूरॉनल भी हैं, 4 न्यूरॉनल भी हैं। रॉड्स के ज्यादातर 4 न्यूरॉनल है, उसके लिए स्लो भी है। एक तो वो न्यूरॉन भी कम डायमीटर के हैं, आज वी आर गोइंग टू सी दैट, आगे हम देखेंगे। सो इन द फोवियर रीजन द कोन्स, देयर इज ओनली कोन विजन एंड देयर इज 3 neuronal pathway for the cones. Horizontal cells inhibit the laterally placed bipolar cell, ये हर जगह है, फोविया में भी है और मैकुला में भी है और बाकी पेरिफेरी में भी है। Horizontal cells are responsible for the inhibition of the laterally placed bipolar cells to increase the contrast between the stimulated and unstimulated area, contrast को बढ़ाने के लिए, फॉर शार्पनेस ऑफ द सिग्नल को ज्यादा शार्पन करने के लिए। एग्जाम्पल इसकी ऐसे है, इफ आई थ्रो लाइट बाई बीम ऑफ लाइट, दीवार पे फेंकता हूं एंड दिस ब्राइट लाइट में एक और मैंने टॉर्च रोशन किया दीवार पे, देयर विल बी एन इमेज। इफ आई ऑफ द लाइट्स, कमरे की लाइट ऑफ कर दूंगा, व्हाट विल हैपन, दिस टॉर्च की लाइट विल बी मोर ब्राइटली विजिबल, इसका मार्जिन कंट्रास्ट मैंने बढ़ा दिया है। स्टिमुलेटेड एरिया एंड अनस्टिमुलेटेड एरिया को मजीद इनहिबिट कर दें, कंट्रास्ट विल इंक्रीज। दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन, वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट इंशाल्लाह। सो हॉरिजॉन्टल सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ द लेटरली प्लेस्ड बाइपोलर सेल्स. So this is cone vein. For rod vein, usually there are 4 neuronal pathway. क्यों? One rod is connected to bipolar cell, horizontal cell तो दोनों में मौजूद हैं, वो तो दरमियान में है. Main pathway is one rod connected to bipolar cell and it is connected to amacrine cell first, then that amacrine cell is connected to the ganglion cell. तो ये 4 न्यूरॉन हो गया. There are 4 neuronal pathway, that is rod, bipolar cell, amacrine cell and the ganglion cell. ज्यादातर ये है. There are rods also conduct through some 3 neuronal pathway के amacrine cell के बगैर भी some fiber are connected to the ganglion cell, but mostly rod pathway is 4 neuronal pathway. In the peripheral retina, cones have 3 neuronal pathway, as I said, अभी मैंने यहाँ पे कहा 3 neuronal pathway as well as the 4 neuronal pathway. अभी हम डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम आ गई है. This is foveal cones. यहाँ पे डायग्राम में बताया नहीं है. These foveal cones are thin. ये तो दोनों एक जैसी बताई हुई हैं डायग्राम में. These foveal cones are thin. ये भी है. One cone is connected with one bipolar cell. That bipolar cell is connected with the one ganglion cell. There is no convergence. 3 neuronal pathway and maximum visual acuity. Horizontal cells are there for the phenomena of lateral inhibition to increase the contrast between the stimulated and unstimulated area. Horizontal cell lateral inhibition phenomena is there. But the main pathways from the cone to the bipolar cell to the ganglion cell, 3 neuronal pathways. So ये cells भी बड़े हैं. ये आगे हम देखें, these ganglion cells are bigger than the cells connected to the rods. Rod के साथ जो connect ganglion cell वो छोटे भी हैं. वो आगे हम देखेंगे. So this is the 3 neuronal pathway. Periphery में rods, these are the rod is connected with bipolar cell is connected to amacrine cell, then that amacrine cell is connected to the ganglion cell. So these are the 4 neuronal pathways, which will be a slower pathway. Second reason is these ganglion cells are smaller than these ganglion cells. Small cells होंगे तो उनमें velocity of conduction will be reduce, कम होगी. So the 4 neuronal pathway, but there are some rods which are connected by the 3 neuron. This rod, for example, is connected with one bipolar cell and it is connected with the another cell, though it is being connected by the 4 neuronal pathway as well as the 3 neuronal pathway. So cone vision as well as cone is connected with the 3 neuronal pathway as well as 4 the neuronal pathway. This cone is connected with this is 4 neuronal pathway for this cone and this is 3 neuronal pathway. So ये पिछली स्लाइड में जो हमने ये आखिर में लिखा हुआ, in peripheral retina cones have 3 neuronal pathway as well as the 4 neuronal pathway. ये दोनों बातें इसमें मौजूद हैं. So in this the rods and cones pathway we have described it. Now these are the neuronal elements. All the neurons in these nervous system, they conduct their impulses to the next neuronal element through release of neurotransmitters.
there is release of neurotransmitters. So these are the neuronal elements. These are the neurons. How they are connected to next neuron, how they will transmit the impulse to next neuron through neurotransmitters. So retinal neurotransmitters, these 4, 5, 6 types of the cells we have seen. So they are transmitters. कौन से transmitters? Many types of transmitters have been detected in retina. Exact nature of all is not known. कुछ का तो पता है कि ये ग्लूटामेट है और यहाँ पे फलां गाबा है और कुछ पता है, लेकिन मैनी न्यूट्रॉन देखे बहुत गए. More than 30 types of neurotransmitters are released by different endocrine cells. So many types of the neurotransmitters have been detected, लेकिन exact nature of all the neurotransmitters is not known. Some of the neurotransmitters we have knowledge of that. So the rods and cones, ये पता है. Rods and cones, when they are stimulated, they will release a neurotransmitter to next neuronal elements. कौन से हैं उनके? Bipolar cells and horizontal cell as well. Bipolar cells पे कौन सा neuron? When they are stimulated, cone stimulated or rod stimulated, there will be release of glutamate. Glutamate is the neurotransmitter for rods and cones. एक ये तो पता है. Then the endocrine cell produce many. सबकी नेचर हमें नहीं पता. जो हमें पता है, डोपामीन इज वन ऑफ देम एंड द गाबा, गैमा अमीनो क्या कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड, गाबा इज देयर एंड द ग्लाइसिन and the acetylcholine and the indolamine, maybe some others. There are many. Some nature of some of the neurotransmitter produced by the endocrine cell is known. जिनका known है वो पता है. And the some neurotransmitters are excitatory. Horizontal cells वाले they are inhibitory. Some neurotransmitters are inhibitory. कुछ इनमें excitatory हैं neurotransmitter, कुछ inhibitory हैं. ये आगे हम देखते हैं कि This is again very important aspect in the neuronal elements of the retina. बाकी सेंसरी फिजियोलॉजी में या मोटर फिजियोलॉजी में और इवन जो ईयर हम पढ़ेंगे या टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट में थोड़ा फर्क है, बट there is transmission is through action potential. Sensory nerve में भी, motor nerve में, mostly transmission of nerve transmission is by the way of action potential. Action potential is produced which will travel along the nerve fiber. But in most of the neuronal elements in retina, except ganglion cells, there is no action potential production. Action potential नहीं प्रोड्यूस होता. That conduction is known as electrotonic conduction. क्या मतलब? डायरेक्ट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट आप जैसे कह लें. 1 मिलीवोल्ट की अगर करंट पैदा हुई है इसमें रॉड में, सेम 1 मिलीवोल्ट विल बी कंडक्टेड टू नेक्स्ट बाइपोलर सेल्स. इतनी सी एक्शन पोटेंशियल नहीं. वो 110 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, नो, इट इज नॉट लाइक दैट इन दी न्यूरॉनल एलिमेंट्स ऑफ द रेटिना. रॉड्स में भी, हॉरिजॉन्टल सेल्स में भी, एमेक्राइन सेल्स में भी, बाइपोलर सेल्स में भी, इन सारे सेल्स में देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल प्रोडक्शन. इट इज इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन. दैट इज देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल इन आवर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन ऑल द न्यूरॉनल एलिमेंट्स ऑफ द रेटिना एक्सेप्ट गैंग्लियन सेल. Only action potential producing cell is ganglion cell, optic nerve cell, जो final जो है, जो which will take form the optic nerve fiber, उसमें action potential पैदा होता है. Rest of the neurons, it is electrotonic conduction. The only cell which transmit through the action potential is that ganglion cell, as I have said. Electrotonic conduction is the direct flow of current from one part of the cell to the other part of cell. 1 मिलीवोल्ट की ट्रांसमिशन पैदा हुई है, ग्लूटामेट रिलीज होगा, अगले में भी उतने मिलीवोल्ट की डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हम देखेंगे पैदा होगी. दैट्स ऑल. इसका फायदा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडेड कंडक्शन इज पॉसिबल. एक्शन पोटेंशियल के लिए तो some threshold is required. A critical level of depolarization is required, which will cause the production of action potential. Only then action potential will be produced, and only then this impulse will be transmitted. But here, 1 millivolt, it will be transmitted as such.
2 millivolt, 5 millivolt, तो graded conduction is पास. बहुत बारीक लाइट, थोड़ी सी depolarization और hyperpolarization वो आगे हम देखते हैं. The production of the receptor potential differs. These rods and cone की receptor potential is in the form of hyperpolarization, not depolarization. लेकिन whatever it is, so it is whatever the grade of this depolarization, hyperpolarization in bipolar cell, rods or immigrant cell, that is responsible for the release of some amount of neurotransmitter. That's all. No action potential production. No all or none law. All the neurons, there is all or none law. If the stimulus is below threshold, no action potential is produced in most of the neuron. All or none जिसको कहते हैं, या तो पूरा action potential will be produced, it will be traveling, or no action potential will be produced. That depolarization will die अगर वो sub threshold है. So there is no all or none law phenomena in the most of the neuronal elements in retina. Retina में all or none law apply नहीं होता, ganglion cell में apply होता है. वो again. Now, phenomena of lateral inhibition, which is important to increase the contrast between the stimulated and unstimulated area. That is, phenomena lateral inhibition, like most of the other sensory, बाकी sensory system में भी ये phenomena is there. Horizontal cells are responsible primarily. Horizontal cell कुछ endocrine cell भी हैं. Horizontal cells send inhibitory signal to the laterally placed bipolar cell from the stimulated bipolar cell. Stimulated bipolar cell, this is being stimulated. By rod is being stimulated, उस पे light पड़ी है, उसके जो receptor potential, that will stimulate this. So this stimulation is conducted finally to ganglion cell. Okay, this is sufficient. No, this is not sufficient. There is a phenomena of switching off the laterally placed neuron. जैसे मैंने example अभी थोड़ी देर पहले दी कि मैंने torch जलाकर बाकी light को off करो, that is more contrast is increased. So there are laterally placed bipolar cell will be inhibited by the horizontal cell. इसके साथ connect होके laterally placed को inhibit कर देगा. So there is stimulation as well as the inhibition to increase the contrast between the stimulated. So horizontal cells send inhibitory signal to laterally placed bipolar cell from the stimulated bipolar cell. Some endocrine cells, उनका भी काम है, they are also involved in this phenomena of lateral inhibition. वो भी काम करते हैं. This reduces the spread of excitation. एक और बात भी है, ये कंट्रास्ट बढ़ाने के अलावा एक्साइटेशन को ज्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं करना. हमने विजन के लिए शार्प इमेज इज टू बी फॉर्म्ड. तो इफ इमेज इज स्प्रेड वाइडली तो शार्प इमेज तो नहीं रहेगा. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी पॉइंट फोकस. इसको ज्यादा फैलने नहीं देना. So this may be important in the reduce the spread of excitation to the vast area. ज्यादा vast area excited now. Lateral inhibition increases the visual contrast. जैसे मैंने example आपको दे दी. It increases the bright light पे एक bright wall पे मैंने white light पे मैंने एक yellow line खींच दी. Contrast between white and yellow is not that. अगर black board अगर white पे होगा उस पे जब मैं yellow light खींचूंगा या white खींचूंगा, that contrast is more. So this lateral inhibition increases the visual contrast. Contrast broader के इसको contrast को increase करता है तो sharp vision के लिए this is very important. So contrast border in the scenes are sharpened. तो sharp image को देखने के लिए this is phenomena of lateral inhibition is very important. ये आप डायग्राम में देख ले. दिस इज अ बीम ऑफ लाइट. दिस एरिया इज बीइंग स्टिमुलेटेड. ओके, स्टिमुलेशन तो होगी, बट इफ यू रिड्यूस दी दिस, इसको आप ब्लैक कर दें, ये एक्साइटेड एरिया, इसको ब्लैक कर दें, कंट्रास्ट विल बी इंक्रीज. सो लेटरली प्लेस्ड एरिया देयर इज इनहिबिटेड एरिया. द येलो जो दिखाया हुआ है, लेटरली प्लेस्ड एरिया को इनहिबिट करके कंट्रास्ट इज इंक्रीज्ड. सो फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन is the function of horizontal cells, and some endocrine cells are also there. Bipolar cells have been seen to be performing two types of the functions, and they are divided, they are grouped as two types of cells. Some cells are bipolar cells, which are known as depolarizing bipolar cells. They depolarize. उनकी डिपोलराइजेशन हमने नोट की हुई है.
कुछ हैं जिनमें हाइपर पोलराइजेशन हमने नोट की हुई है। तो इस तरह दो लेबल कर दिए हमने, हाइपर पोलराइजिंग बाइपोलर सेल और डीपोलराइजिंग बाइपोलर सेल्स। अब इसके लिए थ्योरी है, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं हुआ आगे। Some people say कि पॉसिबिलिटी दोनों है, टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज कैसे, टू एंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। एक बाइपोलर सेल है वो तो होता ही डिपोलराइज है, और दूसरा है वो होता ही हाइपर पोलराइज है जब भी उसको ट्रांसमिशन मिले। तो टू एंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, वन रिस्पॉन्डिंग टू ग्लूटामेट। ग्लूटामेट कहां से आ रहा है, एक्साइटेड रॉड एंड कोन से आ रहा है। When rod is excited or cone is excited, there is release of glutamate. तो कुछ तो ऐसे कहते हैं कि कुछ बाइपोलर सेल ग्लूटामेट को हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, कुछ की डीपोलराइजेशन हो जाती है। सो दे आर रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली, उनका अपना रिसेप्टर डिफरेंट करते हैं, दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली फ्रॉम दी विद द ग्लूटामेट। मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है मेरे अपने जाती ख्याल में। So two entirely different possibilities of cell, one responding to glutamate by the hyperpolarizing and other by depolarizing। एक possibility तो ये है, मेरे ख्याल में ज्यादा important possibility दूसरी है मेरे जाती ख्याल में, I may be wrong। Second is bipolar cells which are stimulated directly by the rod and cone, they will be depolarized, and laterally placed neurons which are through horizontal cells, they will be hyperpolarized. That is the difference. That is the bipolar cells stimulated through inhibitory horizontal cells respond opposite to what the directly is connected with the rods and cones। एक का hyperpolarization होगी और horizontal cell के जरिए जो होगा depolarization होगी, या अपोजिट भी हो सकता है। तो वन इज थ्रू हॉरिजॉन्टल सेल्स, वो और तरह की उनका रिस्पांस होगा, एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद द रॉड्स एंड कोन से और रिस्पांस होगा। तो तो बाइपोलर सेल्स आर डिपोलराइज एज वेल हाइपरपोलराइज, ये दोनों देखे गए हैं। तो टू टाइप्स ऑफ द न्यूरॉनल एलिमेंट, प्रोबेबली हॉरिजॉन्टल सेल्स के जरिए से जो होते हैं उनका रिस्पांस डायरेक्टली स्टिमुलेशन वाले से अपोजिट होता है, डिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। So one type of provides the positive information and the other negative information। वही काम हो गया ना, एक डायरेक्टली स्टिमुलेशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और लेटरली प्लेस इनहिबिट करके नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड सेकंड मैकेनिज्म फॉर द फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन, ये भी हो सकता है दे आर इन्वॉल्व इन द इंक्रीजिंग द कंट्रास्ट बिटवीन द स्टिमुलेटेड एंड अनस्टिमुलेटेड एरिया फिनोमेना ऑफ लेटरल इनहिबिशन में इनका भी कोई रोल हो, डिपोलराइजिंग एंड बाइपोलराइजिंग बाइपोलर सेल्स का। सेपरेशन ऑफ द कंट्रास्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, यही काम है इनका, कंट्रास्ट को इंक्रीज करने का। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइपोलर सेल। एक फिनोमेना है, अभी डिटेल स्टडी और चाहिए इसके लिए, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के लिए। सो हमने अभी रॉड्स एंड कोन्स को सिर्फ नाम लिया है, आगे उनकी एक्साइटेशन का तरीका हमने नहीं सीखा, अभी हम सीखेंगे, देखेंगे। एमेक्राइन सेल्स, बाइपोलर सेल की बात कर ली, हॉरिजॉन्टल सेल की बात कर ली लेटरल इनहिबिशन के लिए। एमेक्राइन सेल्स, देयर आर सेवरल टाइप्स, 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमेक्राइन सेल हैव बीन सीन, और उनके न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत तरह के देखेंगे। सो द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द एमेक्राइन सेल इज नोन, बाकियों का पता भी नहीं, इतने टाइप्स के देखे गए हैं लेकिन उनके फंक्शन अभी डिटेल में एनालिसिस स्टडी नहीं हुई है, रिसर्च इज रिक्वायर्ड और रिसर्च चाहिए। सो फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द एमेक्राइन सेल्स इज नोन। कुछ तो है डायरेक्ट पाथवे बिटवीन रॉड भी, है ना, कि हमने देखा था पीछे, उनका भी तो कोई रोल होगा ना बिटवीन रॉड में, क्यों अल्लाह ने इंसर्ट किए हैं दरमियान में, बट दे आर द पाथ ऑफ द रॉड वीएन में, वो दरमियान में पाथवे है उनका। ऐसा एक काम ये देखा गया है, सम एमेक्राइन सेल्स ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन एट द ऑनसेट ऑफ द सिग्नल। क्या मतलब है, जो स्टिमुलेशन आई देयर इज कांस्टेंट स्टिमुलेशन एंड देयर स्टिमुलेशन इज गॉन। शुरू में वो एक्साइटेड होते हैं, फिर वो उनकी स्टिमुलेशन ऑफ हो जाती है। ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन व्हेन द सिग्नल इज टर्न ऑन, जब लाइट ऑन किया किसी जगह तो वो ट्रांजिएंट स्टिमुलेट हुए। या कुछ ऐसे हैं ट्रांजिएंट स्टिमुलेशन एट द ऑफसेट ऑफ द सिग्नल, कोई ऐसे भी हैं कि लाइट ऑफ किया दे आर स्टिमुलेटेड। हम आगे देखते हैं कैसे स्टिमुलेट होते हैं, ऑफ करने से कैसे स्टिमुलेट होते हैं, आगे हम देखेंगे। सो देयर आर सम एमेक्राइन सेल्स व्हिच आर स्टिमुलेटेड ऑन द ऑनसेट ऑफ द सिग्नल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांजिएंट इसलिए लिखा हुआ है। एंड देयर आर some emigrant cells which are stimulated only on offset of the line, and थोड़ी देर उनकी stimulation होती है, then that is gone, transient stimulation। ये देखा गया।
एग्जैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तो है. व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट तो आपको पता चलता है लाइट इज टर्न ऑन ज्यादा हो गया, लेकिन देन यू आपको वो उसकी चेंज होना, चेंज दैट इज टू नोट द चेंज. ये काम क्या कर रहे हैं, नोट द चेंज, रजिस्टर्ड द चेंज. लाइट ऑन हुई है या ऑफ हुई है, इट इज रजिस्टर्ड देन इट इज ऑफ. वो पहले रजिस्टर करके मालूम करके ऑफ हो जाती है लाइट. There are some endocrine cells which are stimulated by the change in illumination. यानी ऐसे ओवरऑल सीन में मैं देख रहा हूं, अचानक बाहर से धूप पे खड़ा हूं, अचानक धूप पे थोड़ा सा बादल आ गए, इल्यूमिनेशन कम हो गई है, तो देयर आर न्यूरॉन जो इसको फौरन नोट करेंगे. या इल्यूमिनेशन तेज हो गई है, एंडोक्राइन सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो वो बता देंगे. दिस इज नोटेड, ये चेंज को नोट करने के लिए, दैट्स ऑल. वो थोड़ी देर के लिए नोट करके फिर तो बराबर हो जाता है, स्टिमुलेशन इज गॉन. देयर आर सम एंडोक्राइन सेल्स व्हिच आर सेंसिटिव टू मूविंग थिंग. कोई चीज मूव कर रही है, ओनली देन दे विल बी स्टिमुलेटेड. स्टैटिक चीज को वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, व्हेन दैट विल मूव दे विल बी स्टिमुलेटेड. तो और ऐसे भी हैं कि व्हिच आर मे बी डायरेक्शन सेंसिटिव. मूवमेंट अपवर्ड वर्टिकल हो रही है तो कोई और एंडोक्राइन सेल स्टिमुलेट होगा, और हॉरिजॉन्टल हो रही है तो डायरेक्शन सेंसिटिव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए या स्टिमुलेशन के लिए और एंडोक्राइन सेल है, वर्टिकल के लिए और है, किसी और एंगल पे कुछ और है. So different types of endocrine cells have been detected. Exact functions clear नहीं है, जो 2-4 बातें पता हैं अभी have explained it. अब आ जाएं फाइनली सेल्स जो गैंग्लियन सेल्स हैं, which are the actual optic nerve cells. All these cells, इसको जरा रोकें, all these endocrine cells, ganglion cell, bipolar cell, they are converging on the ganglion cell. The final transmission of the impulses, final transmission of information, stimulation or inhibition is conveyed to the ganglion cell, and they are stimulated and they are inhibited. कुछ ganglion cells are inhibited, some ganglion cells are stimulated. Direct pathway वाले inhibited, laterally placed phenomena of lateral inhibition वाले, they will be inhibited. So ganglion cells are inhibited and ganglion cells are stimulated. There are rods in each eye. There are 100 million rods. कितने rods हैं? 100 million, 10 crore rods are there in each eye. There are 100 million rods and there are 3 million cones. यानी 103 million receptors are there in each eye. इन पे जो इमेज बन रहा है वो फिर फाइनली कंडक्टेड बाय द ऑप्टिक नर्व फाइबर. ऑप्टिक नर्व फाइबर गैंग्लियन सेल्स है. नंबर ऑफ गैंग्लियन सेल इज ओनली 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन. क्या मतलब है? वो तो बहुत थोड़े हैं, 1.5 मिलियन और वो 103 मिलियन. So all these rods and cones will convey the information only to this very limited number of these ganglion cells. So you can imagine the level of convergence. That is 100 and अगर एक को 103 million rods will be converging only 1.5 million, और average देख लें, average 60 rods and 2 cones for each ganglion cells. ये 2 कोन देखें, 3 मिलियन है, ये 1.5 मिलियन है, तो 2 कोन हर एक को मिलेंगे. और 100 मिलियन है तो ये सिर्फ 1.5 मिलियन है, तो तकरीबन 60 रॉड्स एक गैंग्लियन, दे विल कन्वर्ज ऑन सिंगल गैंग्लियन सेल. होता तो ऐसे नहीं है. प्रीफ्री सेंट्रल में तो कन्वर्जेंस कम है, प्रीफ्री में कन्वर्जेंस और ज्यादा है, 60 नहीं है, मे बी 100 रॉड्स में भी कन्वर्जिंग ऑन सिंगल गैंग्लियन सेल. क्योंकि सेंटर में कन्वर्जेंस तो ना होने के बराबर है. फोबिया में तो कन्वर्जेंस है ही नहीं. 35,000 फोबियल वो कॉन्स हैं एंड 35,000 ही तकरीबन इसके गैंग्लियन सेल उधर इस्तेमाल हो जाते हैं. So convergence is maximum in the peripheral region. So average भी अगर देखें कि 103 million receptors के लिए only 1.6 million ganglion cells हैं. So convergence is more in peripheral retina, जैसे अभी मैंने बोला, less convergence in the macular region, in the foveal region तो convergence है ही नहीं. So in fovea there is no convergence. 35,000 जो अभी मैंने बोला है, 35,000 cones are there in the fovea, और इसके लिए तकरीबन इतने ही ganglion cells responsible है for the taking information from these 35,000 cones in the foveal region.
विजुअल एक्यूटी इज इंक्रीज इन दी सेंट्रल रेटिना, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ दिस मोर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स एंड नंबर ऑफ गैंग्लियन सेल्स. Peripheral retina is 30 to 300 times more sensitive to weak light. ये नया पॉइंट आ गया. कन्वर्जेंस की बात तो हमें समझ आ गई. If there is more convergence, visual acuity will be reduced. Many rods and cones stimulated will be stimulating only one ganglion cell, तो वो तो many points will be, एक ही पॉइंट स्टिमुलेट हो रहा है तो वो सारे एक ही नजर आएंगे. 2 point discrimination will be lost, वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी. विजुअल एक्यूटी तो कम होगी. लेकिन इंपॉर्टेंट ये एक नई बात ऐड हुई है. व्हाट इज दैट? दैट इज पेरिफेरल रेटिना इज वेरी सेंसिटिव एज कंपेयर टू सेंट्रल रेटिना. क्या मतलब? इवन वीक लाइट को भी वो डिटेक्ट कर लेता है. क्यों? सेंट्रल रीजन में वेरी वीक लाइट विल बी स्टिमुलेटिंग वन कोन फॉर एग्जांपल, और टू कोन, 3 कोन्स या रॉड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं और उनकी कंडक्शन आगे गैंग्लियन सेल पे जमा होनी. उनकी कन्वर्जेंस तो है नहीं. एक कौन डायरेक्ट कनेक्टेड विद वन गैंग्लियन सेल, जितनी स्टिमुलेशन है मामूली सी स्टिमुलेशन है. लेकिन ये लाइट अगर परिफेरी पे पड़ रही है, इतनी डिम लाइट परिफेरी पे पड़ रही है, so this dim light on the periphery, 100 rods will be converging on the single ganglion cell. तो ये थोड़ी थोड़ी convergence summation होगी on the ganglion cell. So that mean very weak light के लिए peripheral retina is more sensitive as compared to central retina. So peripheral retina is very sensitive, more 300 times more sensitive. 30 to 300 times more sensitive to weak light. More than 200 photoreceptors may converge on a single ganglion cell. एक बारीक सी लाइट, पता नहीं लाइट का क्या होता है वो, क्वांटिटेशन कैसे करेंगे, क्वांटम बोलते हैं. एक क्वांटम की लाइट आई है फर्ज करें इधर, एक क्वांटम की इसको डिटेक्ट किया, एक क्वांटम की लाइट अगर परिफेरी पे लड़ती है तो वो 100 रॉड्स 200 रॉड्स पर पड़ रही है तो दे विल कन्वर्ज ऑन दैट, और तो उसको डिटेक्ट कर लेगी. मे बी सेंट्रल रीजन में वो डिटेक्ट ना हो रही हो. So there is more than 200 photoreceptors, they converge on the single ganglion cell. That increases the sensitivity of the retina. That's why in the darkness people dilate, so that the image is found, light is thrown on the peripheral retina as well, वो नजर आने के लिए. तो visual acuity is reduced, वो तो हमने देख लिया. Convergence is there, but sensitivity, there is more sensitivity, but visual acuity is sharp vision is not possible. अब आखिरी 2 बातें गैंग्लियन सेल्स की टाइप्स देख. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स. ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं कितने? 1.6 मिलियन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स. वन टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल्स जो सबसे 40% है, गैंग्लियन सेल्स जिनको कहते हैं W टाइप गैंग्लियन सेल. WXY तीनों नाम याद रखने, W, X एंड Y. W टाइप, X टाइप और Y टाइप. W टाइप गैंग्लियन सेल्स आर 40%. ये क्या है? क्या है इनका डायमीटर? इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर. लेस देन 10 माइक्रोमीटर, ये छोटे हैं, सबसे छोटे यही हैं. लेस देन 10 माइक्रोमीटर एंड दे आर कंडक्शन वेलोसिटी इज इतने डायमीटर पर कंडक्शन वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड. छोटे हैं अगर तो वेलोसिटी भी कम है, 8 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी. डेंड्राइट्स आर स्प्रेड वाइडली इन द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. ये गैंग्लियन सेल्स है ना, तो ये किसके साथ कनेक्ट हो रहे होंगे? ऊपर से बाइपोलर सेल, इमेक्राइन सेल से. सो देयर डेंड्राइट्स आर स्प्रेड इन द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, वाइडली स्प्रेड. वाइडली स्प्रेड इसलिए कि एक गैंग्लियन सेल ने कई रॉड्स के साथ, का रॉड के लिए होते हैं, कई रॉड के साथ कनेक्ट होना है. So their dendrites are widely spread in the inner plexiform layer. यानी ये जितने भी हैं 40%, ये आगे मैं लिख देता हूं, रॉड के लिए है. They are responsible for rod vision. रॉड हैं कितने? They are 100 millions. 100 million rods हैं और ये 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द गैंग्लियन सेल्स है. तो 1.6 मिलियन का 40% कितना बन जाएगा? 40 ये हो जाएगा, और 0.6 का भी समथिंग, तो नंबर आधे से भी कम. 40% आधे से कम है तो नंबर, तो मे बी 1.6, 0.7
40% मैं कहता हूं 0.7 मिलियन, मैंने रफली कैलकुलेट किया 0.7 मिलियन या 0.6 मिलियन टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट है जिनके साथ 100 मिलियन ने कनेक्ट होना है. सो देयर डेंड्राइट्स शुड बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेटिना, इनर प्लेक्सिफॉर्म ले. सो दे हैव गॉट द डेंड्राइट्स स्प्रेड वाइडली इन द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर कि इन सारे डेंड्राइट्स पर सारे रॉड्स ने 100 मिलियन रॉड्स ने कन्वर्ट होना है. नंबर ऑफ दिस इज ओनली 0.6 मिलियन, 0.7 मिलियन. So they are responsible for rod vision. ये rod vision के लिए responsible है. They are detection of the movement में भी ये इन्वॉल्व है. Movement is detected by these, दोनों काम ये करते हैं. So rod vision के लिए तो velocity और diameter याद रखें. अगले टाइप ऑफ द एक्स टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल, ये सबसे ज्यादा है 55%. 40 ये हो गए, 55 ये हो गए, 95% हो गए. अब 5% कोई बाकी रह गए. तो दीज आर द एक्स टाइप गैंग्लियन सेल्स which are 55% और their diameter is 10 to 15 micrometer, almost उनसे डबल हो गया है वो पॉइंट, that is वो less than 10 था तो ये 16 तक चला गया है तो almost डबल हो गया है. and velocity is also double, 14 meters per second. वो 8 था, ये 14 meters per second है. and their dendrites do not spread widely. क्यों? they are connected to cones. कौन है 3 मिलियन और ये है भी मोर देन हाफ 50%, इसलिए उतने ज्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं है इनके डेंड्राइट्स. देयर डेंड्राइट्स डू नॉट स्प्रेड टू वाइडली जैसे हमने उनमें देखा था. वो क्योंकि 100 मिलियन रॉड के लिए वो सिर्फ 0.6 मिलियन थे, ये तो 0.8 मिलियन के करीब है. 0.9 मिलियन बहुत ज्यादा होंगे 55%, ये ज्यादातर यही हैं. सो दे विल बी नॉट वाइड, वेरी वाइडली स्प्रेड नहीं होंगे. सिर्फ इनके लिए 3 मिलियन कौन हैं जो इनके साथ कनेक्ट होनी है और नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है. सो velocity is more, diameter is more, velocity is more, they are not too widely spread. तो इस वजह से ट्रांसमिशन ऑफ फाइन डिटेल इन्हीं वजह से हो सकती है. वाइडली स्प्रेड होंगे तो फाइन डिटेल तो नहीं नजर आएंगी ना, विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी जितनी. तो यहाँ पे ज्यादा डेंड्राइट ज्यादा फैले हुए नहीं है तो डिटेल्ड विजन एंड कलर विजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोन विजन. कोन विजन तो कलर विजन है, आगे हम देखेंगे कोन की, हम देखेंगे कोन इज कलर विजन. रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन. तो ये दूसरी टाइप है. और तीसरी टाइप जो 5% रह गए हैं, दे आर नोन एज वाई टाइप सेल्स. वो सिर्फ 5% है, इतने ही रह गए हैं. 5% है तो कोई ऐसा काम होगा ना जो 5% वाला, उनका डायमीटर 35 माइक्रोमीटर, डबल ट्रिपल टाइम उससे भी बढ़ गया. वो लेस देन 10 था, वो 15 तक था, तो ये 35. तो दे आर वेरी फास्ट कंडक्टिंग. वेलोसिटी इज 50 मीटर्स पर सेकेंड. फास्ट कंडक्शन है. इनका काम क्या है? डेंड्राइट्स आर वेरी वेरी, अब यहां एक और वेरी डाल दी ज्यादा करने के, वेरी 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 वाइडली स्प्रेड. क्यों? दीज 5% विल रिप्रेजेंट ऑल होल ऑफ द रेटिना. ऑल द रॉड्स एंड कोन के लिए सही 5% है. कोन वालों के साथ भी यही मिलेंगे और रॉड वालों के साथ भी यही कनेक्ट होंगे जो भी इनका काम है. तो ये सारा काम पूरे रेटिना में जो इनका काम है, सारे रॉड्स एंड कोन्स विल बी कनेक्टेड विद दिस. सो दे आर वेरी वेरी वाइडली स्प्रेड इन द होल ऑफ द रेटिना में. सो स्टिमुलेटेड बाय द रैपिड चेंजेस इन द विजुअल इमेजेस, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइक दैट. तो रैपिड चेंज को डिटेक्ट करने के लिए पूरे रेटिना में ये काम करते हैं. डिटेक्ट करके फिर सो जाते हैं, इनका फिर और काम नहीं रहता. डिटेक्ट करने के बाद बाकी काम, विजन का काम इनका नहीं है. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. रैपिड चेंज को नोट करने के लिए पूरे रेटिना में कोई मूवमेंट अचानक होगी, फ्लैश ऑफ लाइट आ गई अचानक, तो उसके मुताबिक जो रिफ्लेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम फ्लैश ऑफ लाइट ऑन दिस साइड, आई मे टर्न, होल ऑफ द बॉडी मे टर्न टू दैट साइड. ये रिफ्लेक्स आपने देखा होगा. सो दिस इज, these are the responsible for the initial onset and the reflexes. जो हम reflexes, visual reflexes हम आगे बात करेंगे. तो so they are responsible for that transient stimulation. जैसे मैंने कहा कि उनकी stimulation होने के बाद सो जाते हैं, उनकी stimulation खत्म हो जाती है. No precise vision. Vision के लिए है ही नहीं. They are responsible, important to move the eye toward the important changes. अचानक वहां पे फ्लैश ऑफ लाइट हुई, मेरी आंखें भी मूव करेंगी उधर. ये जो फ्लैश ऑफ लाइट अचानक हुई, they will detect it and my eyes may turn, my head may turn, my whole body may turn. The other muscles are also reflexly stimulated. आगे हम देखेंगे visual reflexes कहां तक फैल सकते हैं. So they are important to move the eyes toward the important change. ये उनका काम है.
So ganglion cell first, ये वो cells हैं, आखिरी 2-3 स्लाइड हैं, फिर these are cells which will transmit action potential. ये सारे bipolar cell, endocrine cell जब इन पे आके लगेंगे तो action potential इनमें प्रोड्यूस होगा. Spontaneous continuous discharge, ये बात याद रखनी है आपने. If I close my eyes, there is no excitation, there is no stimulation, no rod, no excitation, कुछ भी नहीं हो रहा. But अगर if you record the number of impulses in ganglion cells, ऑप्टिक नर्व में आंखें बंद करके ऑप्टिक नर्व के गैंग्लियन सेल्स में नंबर ऑफ इम्पल्सेस रिकॉर्ड करें, देयर इज बेसिक फायरिंग रेट, उनमें इम्पल्सेस पैदा हो रहे होते हैं. दैट इज रेट इज बिटवीन 5 to 40. 5, देयर आर न्यूरॉन्स गैंग्लियन सेल जिनमें 5 इम्पल्सेस पर सेकंड पैदा हो रहे हैं, 10 पैदा हो रहे हैं, 30 पैदा हो रहे हैं, 40 अप टू 40 गैंग्लियन सेल. इसका फायदा क्या है? विजुअल सिग्नल्स आर सुपर इम्पोज. क्या मतलब? If they are stimulated, number of impulses will increase. If they are inhibited, phenomena of lateral inhibition हमने क्या? Number of impulses will decrease. ये basic firing rate का ये फायदा है कि वो दोनों information रिकॉर्ड हो सकती हैं. Stimulation will be recorded in the form of increased number of impulses and inhibition will be recorded in the form of reduced number of impulses. तो इसलिए बेसिक फायरिंग रेट अल्लाह ने इसमें रखा हुआ है. फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन. तो स्टिमुलेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिस्चार्ज एंड इनहिबिशन डिक्रीजेस द नंबर ऑफ इम्पल्सेस और नंबर ऑफ डिस्चार्ज. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशल सेल्स स्टिमुलेटेड बाय द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी हमने पहले बात कर लिया. देयर आर स्पेशल सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. गैंग्लियन सेल 5% वो जो सेल्स हैं बात कर लिए. ऑफ ऑन रिस्पॉन्स, इसको हम देखते हैं. आखिरी बात, ऑफ ऑन रिस्पॉन्स इन सब न्यूरॉन्स में मौजूद है. व्हाट इज दैट? ऑफ ऑन रिस्पॉन्स क्या है? अगली स्लाइड पे हम वादे कर देते हैं. व्हाट इज दैट? नंबर 1 एंड नंबर 2, ये एक न्यूरॉन है. नंबर ऑफ इम्पल्सेस अभी हमने कहा कि 4 to 40 हो सकते हैं. अब ये नंबर ऑफ इम्पल्सेस हैं आंखें बंद करके, विदाउट स्टिमुलेशन, विदाउट इनहिबिशन, नंबर ऑफ इम्पल्सेस इतने हैं. अब ये वाला न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है. एक रॉड और कोन ने स्टिमुलेट किया है, बाइपोलर स्टिमुलेट हुआ है, गैंग्लियन सेल पर स्टिमुलेशन पहुंची है. तो इट विल बी स्टिमुलेटेड. स्टिमुलेशन मींस नंबर ऑफ इम्पल्सेस विल इंक्रीज. नंबर ऑफ इम्पल्सेस इंक्रीज. And this is very important. Initially number of impulses become very high, लेकिन वो लाइट आ नहीं है, अभी वो इमेज उधर मौजूद है, but the number of impulses will be reduced. इतने नहीं रहेंगे, उतने भी नहीं रहेंगे. दे आर मोर देन दिस, ज्यादा एक्साइटेड. इनिशियली दे आर मोर एक्साइटेड और फिर एक्साइटेशन थोड़ी सी कम हो जाती है. और ये मोर एक्साइटेशन वो एंडोक्राइन फंक्शन वाला जो ट्रांजिएंट उनका रोल है ना, थोड़ी सी एक्साइटेशन वो भी भेजते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं तो इनके नंबर ऑफ इम्पल्सेस भी कम हो जाते हैं. सो दिस इज ऑन पे देयर इज मोर एक्साइटेशन और फिर लेस एक्साइटेशन बाकी रहती है जब तक हम उसको ऑफ न करें. जब उसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा? इसी में ऑफ मींस स्टिमुलेशन इज गॉन, इनहिबिशन, दे आर कंप्लीटली इनहिबिटेड, नो इम्पल्सेस, कोई इम्पल्स पैदा नहीं हो रहा. फिर वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल इम्पल्सेस पे वो आ जाएंगे जो ये वाले इम्पल्सेस हैं. तो इसमें स्टिमुलेटेड न्यूरॉन में देयर इज ऑन ऑफ रिस्पांस. ऑन पे मोर स्टिमुलेशन और फिर कम होके फिर ऑफ पे भी रिस्पांस है. ज्यादा ऑफ हो जाते हैं और फिर नॉर्मल एक्साइटेशन पे आ जाते हैं, जो बेसिक फायरिंग रेट है आंखें बंद करके जब मैं. और जो न्यूरॉन लेटरली प्लेस्ड है, लेटरल इनहिबिशन जो हमने डिस्कस की, उसका नंबर ऑफ इम्पल्सेस था बेसिक, वो लेटरली प्लेस्ड एंड इनहिबिट हुआ तो देयर इज इनहिबिशन, नो इम्पल्सेस देयर. और जब वो लाइट ऑफ की तो ये तो वो इनहिबिट हो जाएगा, ये स्टिमुलेट हो जाएगा क्योंकि इट वाज बीइंग सप्रेस्ड. ये सप्रेशन रोकी है, दैट मींस स्टिमुलेशन, नंबर ऑफ इम्पल्सेस विल इंक्रीज और फिर वापस आ जाएंगे अपनी जगह पर. तो दिस इज ऑन ऑफ रिस्पांस. डायरेक्टली स्टिमुलेशन में ऑन ऑफ रिस्पांस है और लेटरली प्लेस में ऑफ ऑन रिस्पांस. तो ये बेसिक फायरिंग रेट है. एक्साइटेशन, शुरू में एक्साइटेशन ज्यादा होती है फिर खत्म हो जाती है. इनहिबिशन में शुरू में एक्साइटेशन, इनहिबिशन ज्यादा होती है फिर कम हो जाती है. दैट्स ऑल. तो ये टाइप्स डिफरेंट न्यूरॉनल एलिमेंट्स के फंक्शन हमने डिस्कस किए. एक न्यूरॉनल एलिमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहता है भी, दैट इज द रॉड्स एंड कोन्स.
उनका डिटेल फंक्शन तो हमने सिर्फ नाम पढ़ा है हमने रॉड एंड कोन का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका लिखा हुआ है रिस्पॉन्सेज इन गैंग्लियन सेल। पहले में एन एरिया एक्साइटेड बाय द स्पॉट लाइट और एन एरिया इनहिबिटेड बाय द लेटरल इनहिबिशन में किस तरह होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे photochemistry of VN के how the rods on absorption of light or cone on absorption of light stimulate कैसे होते हैं, तो उनकी स्टिमुलेशन का खास फिनोमेना है, बाकी सारे रिसेप्टर से डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसको आप शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।